Hello children, today we will understand how our eyes work, right? So try to listen carefully because it is one of the fascinating aspects of our vision. Though our vision has many fascinating aspects, but this is one of the very most important aspects. So try to understand how our eyes work. By saying that, I would mean to say that you must have felt, तुम लोगों ने फील किया होगा that when you are changing, और हम लोगों ने सबने फील किया है कि जब हम अपना अपना फोकस एक बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से when we try to shift our focus from a very uh, from an object which is kept at a very far away from us, and then try to shift our focus to an object which is very close to us. You must have seen there is no trouble. We don't feel any kind of a strain in our eyes, neither any kind of a stress in our heads, right? So that focusing from a very far away situated object to an object which is very closely located, our eyes are in no trouble changing the focus. And how does it happen? Today we are going to unfold that mystery. So try to understand. So in this simulation, children, you can see the object is kept at a maximum distance from the human eye, right? From our eyes. अब यहाँ पे you can see there is a lens. Which type of a lens it is? Convex. Now for the image to be formed, children, you must have learned in the chapter light that the rays after the refraction, after bending from the lens, they should meet at a point, right? Right now they are meeting at retina. It means that a sharper image is formed at the retina. So the human eye is able to, our eyes, राइट वी आर ह्यूमन सो आर आईज तो हमारी आंखें ये करने में सक्षम है दे आर केपेबल टू focus on a very far away object provided that they are able to form their image perfectly at retina. But what happens actually, see children, when you suddenly try to shift your focus, or we suddenly try to shift our focus from a far away located object to an object which is very close to ourselves, see what is going to happen. But before that, we should imagine that had the lens been inflexible, अगर ये लेंस कोई एक जेली लाइक सब्सटेंस से मिलके नहीं बना होता, या ये कोई एक ऐसा लेंस होता जो कि रिजिड होता, राइट, एनी ग्लास से बना हुआ कोई लेंस हम मान सकते हैं, वी कैन कंसिडर दैट, तो ये क्या करता, ये वही करेगा जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. सी, सो कंसिडर दिस लेंस to be rigid. Now this rigid lens will not do anything. See, the object is moving closer, so you can see behind the lens the rays are the point of their convergence, right? The point at which the rays should meet, it is moving behind retina. You can see these rays, they are moving behind retina. Retina से पीछे जा रही है. तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा और ये क्लोज आता जाएगा हमारी आंखों के, you can see the rays, they do not meet at retina, and then that meeting point, expected meeting point, is moving away from retina. Therefore, had this lens, our eye lens, been rigid, अगर ये बिल्कुल rigid होता, solid होता, flexible नहीं होता, तो ऐसा होता, हमारी eyes, हमारी brain focus नहीं कर पाता अलग अलग जगह पे located objects पर. But since we are human and God has gifted us this ability which we call by the name of power of accommodation, तो फोकस करवाने में यहाँ पे हम समझेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन का क्या रोल होता है, हाउ दैट comes into action. So for that you should see how human eye looks like internally. So this is the structure, internal structure of the human eye, where you can see a lot of ciliary muscles, they are trying to bend the lens. They just sometimes they press the lens, sometimes they stretch the lens, right? And then you will see what is going to happen after I take this away. Now, since as we are humans and God has gifted us the ability to focus on the things wherever they are, nearer or closer or farther, तो अब क्या होता है कि हमारा ब्रेन gives the signal which becomes the cause for the action of the ciliary muscles, right?
उस सिग्नल से हमारी सेलेरी मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं एंड देन ये सब जो भी मैं कह रहा हूँ पहले एक चीज, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए कही जा रही है विच इज वेरी वेरी क्लोजली लोकेटेड ऑब्जेक्ट, राइट, माइट बी एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर आईज, दैट इज द नियर पॉइंट, क्योंकि हम 25 सेंटीमीटर तक रखे हुए डिस्टेंस को, या 25 मिनिमम जो डिस्टेंस होती है हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने की, वो कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे हम कोई रखा हुआ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। उससे पास होगा 20 या 15 या 10 सेंटीमीटर पर रखा होगा तो हमारी आंखें प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगी, स्ट्रेन फील होता है, राइट, वी विल फील सम स्ट्रेस, स्ट्रेन इन आवर आईज, तनाव हमें महसूस होगा, हमारी आंखों में ऐसा लगेगा हमारी देयर इज सम मसल्स ट्राइंग, दे आर ट्राइंग टू वर्क बट लेकिन वो वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, सो दैट इज व्हाट स्ट्रेस मीन्स, काम नहीं होना, उसकी वजह से स्ट्रेस भी होता है। तो वो तो अलग बात है, बट यहाँ पर अब होगा क्या, सी our brain will instruct in such a manner that due to the power of accommodation, the lens will get thicker and thicker. Why? Because the ciliary muscles will be thickening the lens. वो लेंस को मोटा करती जाएंगी, और जैसे जैसे लेंस मोटा होता जाएगा वैसे वैसे यू कैन सी दैट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दीज रिफ्रैक्टेड रेज दैट वाज वन शिफ्टेड बिहाइंड द रेटिना will try to be on the journey of coming on to the retina. वो एक ऐसे रास्ते पे आ जाएगा जिस रास्ते पे वो वापस से रेटिना पर आ सके। तो देखते जाते हैं हम कि ये जैसे जैसे हमारा ब्रेन बोल रहा है कि भाई सिलेरी मसल्स को आप प्रेस करो लेंस को ताकि ऑब्जेक्ट प्रॉपरली फोकस हो पाए रेटिना पर, राइट, हम देख पाए उस ऑब्जेक्ट को ताकि उसकी इमेज कहाँ बने, रेटिना पर। तो यू कैन सी व्हेन आई स्लाइड इट कंप्लीटली, shift the focus to the near point, you can see that यहाँ पे इसको भी और पास कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, राइट, तो दिस इज माइट बी द नियर पॉइंट एंड स्टिल नियर पॉइंट मतलब ये 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हम आ सकते हैं, इससे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। तो हमने देखा कि लेंस थिक हो गया और थिक होने से यू कैन सी द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हैज कम ऑन रेटिना फॉर्मिंग अ शार्प इमेज, हमें दिख रहा है वहां पे एक शार्प इमेज बन जाएगी बिकॉज हमने पढ़ा यही है, इमेज तभी बनती है व्हेन द रेज मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, राइट। So now this is how the lens work when this is how our eyes work when we try to shift our focus from an object which is kept at a large distance from us to an object which is kept at a small distance from us, from our eyes. तो ऐसा हुआ। अब मान लेते हैं ये वापस, अब एक ऐसे सिचुएशन जब हम पास देखते देखते अचानक से दूर देखते हैं तब हमारी आईज कैसे काम करती हैं, that is we try to shift our focus from watching an object which is kept very near to us to an object which is now kept very very far away from us। अभी तो हमने क्या देखा चिल्ड्रन कि एक दूर मौजूद एक ऑब्जेक्ट था और वो जैसे जैसे हम पास आते गए तो वैसे वैसे ही सिलेरी मसल्स थिक होती गई तो लाइट्स की रेट ज्यादा बेंड करती गई जिसकी वजह से कहाँ बन रहा था इमेज वॉज फॉर्म्ड एट द रेटिना। बट अब यहाँ पे इसके उलट जस्ट the opposite of what we have studied, we will study. That is when our eyes try to shift the focus from an object which is kept close to our eyes to an object which would be kept very very far away from eyes। जब हम पास से दूर देखते हैं तब हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, we will try to learn that, see how that again the magic unfolds। So now I'm drifting this object slowly away from the eyes। तो ये ऑब्जेक्ट देखिए दूर जाता जा रहा है, it is moving away further, still away, and the lens is rigid, that means consider it that the power of accommodation is not found in human bodies। मान लेते हैं कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ह्यूमंस में है ही नहीं, तभी हमारा आइज कैसे काम करते हैं ये हमें पता पड़ रहा है यहाँ पर। So you can see this point of convergence, it is before retina, right, it is before retina, and thus again it will give you a blurred vision of what you are able to see around you, right? But now the god has given a chance
in the form of granting this amazing power of accommodation, right? Since the object is located very, very far away, so the ciliary muscles will be directed. उनको ये कहा जाएगा कि आप लेंस को पकड़ के रिलैक्स करो. That is, you try to pull the lens. So now see, if the ciliary muscles from the top of the lens, you can see that again, from the top and the bottom, they will try to uh, cause the relaxation of the lens. See how the lens is now becoming thinner. When the lens is becoming thinner, the radius of curvature increases because the lens is less bent now. Lens क्या हो रहा है children? देखो less bent हो रहा है. जैसे जैसे ये less bent होता जा रहा है, वैसे वैसे जो path है refracted light का, वो drastically change नहीं हो रहा, वो दूर जा रहा है, right? You can see this point of convergence of the refracted rays. It is moving away, away, and finally on the retina. So this is how our eyes work. When the object is very close away, sorry, when the object is very, very far away, तो होता क्या है यहाँ पे, the lens become thinner, causing the radius of curvature to increase. Thereby the focal length will increase and the power will reduce, because we have learned from this relationship that, see, try to understand, let me make it very clear to you. It will ask me to, okay, so see, we know that children, power is equals to 1 by the reciprocal of focal length, or 1 by f, right? And focal length will be calculated in meters. So now what happens when the object is very, very far away and your eyes are able to focus on it, the lens is thinner. The lens is thinner, causing the focal length of the lens to rise. तो जैसे जैसे लेंस थिन हो जाता है, देखते हैं यहाँ पे, तो लेंस थिन हो गया, इसका मतलब हो गया कि फोकल लेंथ बढ़ गई. फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर क्या हो गई, कम, बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. जिस रेशियो में फोकल लेंथ बढ़ती जाएगी, उसी उसके अपोजिट रेशियो में पावर में डिक्लाइन आएगा, पावर विल डिक्रीज इन द अपोजिट रेशियो. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, जिसकी वजह से द फोकल पॉइंट, द पॉइंट ऑफ फोकस विल शिफ्ट, and this is what makes our eyes different from eye lens, different from रिजिड लेंसेज, राइट? जो हमें मार्केट में लेंसेज मिलते हैं, तो उससे हमारे आई का लेंस बहुत ही एक, यू कैन से इट इज अ फैसिनेटिंग पीस ऑफ गिफ्ट गिवन बाय द गॉड टू अस, बिकॉज इट कैन बी, इट कैन चेंज इट्स शेप. एंड हाउ कैन इट चेंज इट्स शेप? बाय द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स. जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो लेंस थिन हो जाता है. लेंस थिन हो जाता है, सी, when the object is, when the object when the object when the object is far away, far away, the lens thickens, the lens, the lens thickens due to the power of accommodation. This is the power of accommodation. The focus changes suddenly without even letting us come to know, right? Just within, might not be in a fraction, millisecond, picosecond में ऐसा होता होगा शायद. So when the object is far away, the lens not thickens actually, sorry, the lens becomes thinner. You can see that the ciliary muscles were trying to cause the relaxation of the lens. वो क्या कर रही थी? लेंस का रिलैक्सेशन कर रही थी, राइट? जिससे कि लेंस क्या हो रहा था, क्या हो रहा है चिल्ड्रन, क्या हो चुका है, थिन हो चुका है. So the lens becomes, the lens becomes thinner, the lens becomes thinner due to the accommodation power, causing the focal length to increase, thus decreasing power, thus decreasing power. And the vice versa will happen when the object will be kept closer. When the object is kept closer in this way, इस तरीके से, then due to the power of accommodation, the focus will shift in such a way that the refracted rays are able to meet at retina. ये brain हमारा ये सब करता है processing.
तो अब ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि नाउ द ciliary muscles will be acting in opposite manner as to what they have acted in the previous case. तो पहले तो ciliary muscles वो लेंस को थिन कर रही थी, लेकिन अब ऑब्जेक्ट चूंकि पास आ चुका है तो लेंस क्या होता जाएगा चिल्ड्रन, यू कैन सी द लेंस इज getting thicker and thicker, and more thicker the lens gets, more drastically the path of the light after refraction will change, causing the rays of the light to bend more, right? So this is how the this was what the reason. So I will write here opposite of what you have written here, or what I have I written here. So when the object is closely located, the lens becomes thicker, focal length कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ के कम होते ही पावर बढ़ जाएगी, राइट? सो एक और कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आता है, द लेंस विल हैव मैक्सिमम पावर व्हेन इट इज ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट्स which are located might be at the near point. यदि हमसे वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, दे आर केप्ट एट nearly around 25 centimeters from us, then the lens will have maximum power, and minimum power hogi when it will have the maximum focal length, minimum power to maximum focal length, maximum power to minimum focal length, right? Now you can see the power is minimum क्योंकि focal length बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. You can see the distance between the lens and the point of focus over here, that is the point of intersection of the two refracted rays, right? So that is what the essence of how the human eyes work, children. So stay tuned to my channel for next lectures. Maybe in a day or two I will deliver the lecture on hypermetropia and myopia, the two most common eye defects, and then presbyopia also. And you can see here in the simulation as well, sorry, that there is a facility by which I can clearly depict these situations of eye defects, right? So till then, have a sound sleep, and prepare well for your examinations, maybe for your pre-boards or your final boards examination. Thank you, children.